क्लिक हो गया। अब प्लीज आप ऐसा कीजिएगा, मैं आपको 5-10 मिनट दूंगा ताकि आप इस एक्सरसाइज का तो समझ जाए, फिर बेशक रोजाना कीजिएगा और पहले कर लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ इसको। एवरीबॉडी प्लीज क्लोज योर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। Keep your eyes closed, please. Take a deep breath, hold for a moment, and exhale. Again, take a deep breath, hold for some moments, and then exhale. You're at the deeper level, going inside. At the deeper level, take again deep breath, hold for some moments, and exhale. You're at the deeper level of your mind. Now, please visualize the picture of the person that you have written in your list, the first number, and talk to him. Tell him or her that you have forgiven her. तुमने उसको माफ कर दिया है. And ask him or her कि मुझे भी माफ कर दो. अगर रिलेशनशिप में ज्यादा डिस्टर्बेंस है तो ये डायलॉग चलेगा कुछ देर तक, लेकिन असल बात ये है कि आप अपने अंदर क्या चॉइस लेते हैं. क्या आप वाकया ही माफ करने की पोजीशन में हैं? क्या आप इनफ स्ट्रेंथन हैं कि आपने उसको माफ कर दिया? कीप योर हार्ट क्लियर. और जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हेटेड का, जेलिसी का, रिवेंज का मतलब ये है कि आप पिल खुद ले रहे हैं पॉइजन की और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा मरेगा. अगर ये पोजीशन है तो प्लीज आप उसको माफ कर दीजिए. वो झगड़ा करेगा, बहुत से ब्लेम भी देगी, लेकिन आप उसको कहें कि मैंने आपको माफ कर दिया, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए. अगर ये डायलॉग लंबा चलता है तो आप ये कह के कि ठीक है मैं फिर हाजिर हूंगा या हाजिर हूंगी, आप नेक्स्ट पे चले जाइए, पार्टिसिपेंट पे, उससे बात कीजिए कि मैंने आपको माफ कर दिया, प्लीज मुझे आप भी माफ कर दीजिए. थोड़ी देर उसके साथ भी आपका डायलॉग चलता रहना चाहिए. फिर आप अगले नंबर पे जाइए, फिर आप अगले नंबर पे जाइए. जैसे जैसे आप फॉरवर्ड करते जाएं, और अगर डायलॉग लंबा होता तो अच्छा ठीक है मैं फिर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा या हाजिर हो जाऊंगी, लेकिन मैंने आपको माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर. और फिर आप नेक्स्ट के नंबर पे चलिए. तो मैं आपको 10 मिनट देता हूँ इसको, प्रोसेस को करने के लिए. प्लीज गो अहेड और स्लोली स्लोली आप इसको बी वेरी सिंसियर विद योर सेल्फ. दिस इज द पार्ट ऑफ योर सेल्फ that you start loving now. Start love yourself. और सेल्फ लविंग में भी पेन इन्वॉल्व होती है, सेल्फ डिसिप्लिन में भी पेन इन्वॉल्व होती है. लव योरसेल्फ और टेक योर टाइम. इस लिस्ट को जितना आज कर सकते हैं कीजिए 10 मिनट के अंदर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे एंटर होना है. प्लीज डू दैट.
बी डीपली कनेक्टेड विद योर सेल्फ, अपने आप को भी माफ कर दीजिए। मैंने आपको माफ कर दिया, मुझे भी माफ कर दीजिए। अगर डायलॉग लंबा हो तो कहीं मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। मैंने अल्लाह की रजा की खातिर आपको माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। बी कनेक्टेड विद योर इनर सेल्फ, deep inside, and if you think there is some issues even with the self, आप अपने आप को भी माफ कर दीजिए। टेक योर टाइम। ऐसे अजीज, ऐसे दोस्त अहबाब जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप उनके नाम भी अपनी लिस्टों में अगर अभी नहीं तो बाद में शामिल कर लीजिए। इवन बच्चों के नाम भी शामिल कीजिए। टेक योर टाइम।
Be deeply connected with yourself. Free yourself. It's the time of your freedom. By breaking vicious cycle of your life. In 2 to 3 minutes, I'm going to finish it. Okay, in 10 to 15 seconds, we'll close it today, but we'll continue it later. Okay, say goodbye to your जो भी आपका मेहमान है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, जो भी अजीज है, आज के लिए को मैं फिर हाजिर हूँगा, लेकिन मैंने आपको वाकई दिल से माफ कर दिया. And thank you